अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन फुल ऑन सर्विस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी डस्ट हो चुका था। ये कभी वॉश नहीं हो रही थी, कभी स्पिन नहीं हो रही थी, इसलिए ये पाउडर भी डाल के क्लीन किया कस्टमर, लेकिन इतना सही तरीके से नहीं हुआ। इसलिए हम इसको अलग अलग करके एक एक पार्ट अलग करके वॉश करने वाले हैं। आप देख सकते हो इसका बहुत जाम भी हो चुका था इसका ड्रम। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना, इसको अलग अलग करके आपको सही तरीके से मैं इंशाल्लाह दिखा सकूं। ये आप देख सकते हो पल्सलेटर से बुश अलग होके निकल चुका, बहुत जाम होगा। और दूसरा क्या है, ये चेकनेट
बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो चुका है, आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। देखिए ये चेक नेट सही तरीके से नहीं है, उसका अलग अलग शेप हो चुका है। इसमें स्पानर भी नहीं पकड़ेगा, इसको कट करके निकालना पड़ेगा हमको। अभी नेट तो फ्री हो चुका है, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा ये। ऊपर है ना पल्सलेटर का बुश जाम हो चुका, वो पल्सलेटर के बुश को हमें कटिंग कर लेना चाहिए अभी। ट्रम तो अलग हो चुका है मेरे फ्रेंड्स। इसमें ये कटिंग करने के वक्त बहुत ध्यान रखना है मेरे फ्रेंड्स। क्या है, कई बार मिस्टेक भी हो जाता है,
अगर से मशीन ब्लेड है ना कहीं बाजुक लग गया तो ये आउट ड्रम बिल्कुल नहीं काम आएगा। अब देख सकते हो कितना डस्ट है इसमें। अलग अलग कलियां में फ्रेंड्स इसमें अभी साफ कर लेंगे। देख सकते हो अभी फ्रेंड्स इसमें और वीडियो दिखाने में कहीं बोलने में अगर से आगे पीछे कुछ मिस्टेक हो गई तो आप माफ़ी चाहता हूँ मैं। बोरोसिक एसिड डालने से और सब से निकल जाता है केमिकल्स। मैं तो निकलता ना हो।
टैंक शीट डालने की बोली तो शीट
जमको गाडी आचरण झालं ते
फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत साफ़ हो चुका है और ड्रम सब कुछ साफ़ होगा हमें फ्रेंड्स। पल्सलेटर सब कुछ क्लीन हो गया। ये वॉशिंग मशीन का स्पाइडर हब है ना, कट करके निकाल चुके थे हमें। लिक्विड डालने के बाद भी नहीं निकला हुआ, उसके लिए कट करना पड़ा। कट करके निकाल दें, वो भी चेंज करेंगे। अब चेक नेट और पल्सलेटर बुश और बेल्ट, ये नए चीज़ें हैं, नए सामान अब एक एक करके हम फिट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहना। दोस्तों, वॉशिंग मशीन अलग अलग पार्ट कर लेने से पहले हमको ये ध्यान रख लेना है, ये स्प्रिंग है ना, ड्रम स्प्रिंग, ये बैलेंसर है। ये कन्फ्यूज होके चेंज हो गया तो ड्रम अनबैलेंस हो जाएगा, वाइब्रेशन होएगा। उसके लिए इसको मार्क तो कर लेना है, एक इसका फ़ोटो तो खींच के रख लेना है। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, मोटर फिट करने के लिए बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाए थोड़े लोग। इसमें कभी भी है ना, ये जैक अंदर आना चाहिए वेयरों को।
फ्रेंड्स, बेल्ट डालने के बाद मोटर एडजस्टमेंट चेक कर लेना है माय फ्रेंड्स। बेल्ट लूज टाइट, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। देख सकते हो अभी किस तरह फिट किया है, इस तरह से होना चाहिए। बेल्ट अगर से टाइट हो गए तो मोटर में लोड पड़ेगा, मोटर हीट हो जाएगी। अगर से लूज़ होएगा तो सही नहीं तरीके से फिर आने सीखेगी वो। इसलिए इस तरह होना चाहिए। बेस में भी बहुत सारा क्लीन हो चुका है, अभी देख सकते हो अभी। फ्रेंड्स, ये इस तरह से वर्क होता है ये। फ्रेंड्स, ये ड्रम उतारने से पहले हमको चेक कर लेना है कौन से साइड आना चाहिए। सिंपल तरीका है। देख सकते हो अभी ये प्रॉपर्ली तरीके से फिट होना चाहिए। अगर से थोड़ा अनबैलेंस हो जाए तो फिर दिक्कत होती। देख सकते हो चारों साइड भी इस तरह बैठना चाहिए। ये स्प्रिंग है ना, थोड़ा अनबैलेंस होएगा तो टाइमिंग चेंज होएगा, वाइब्रेशन होएगी, थोड़ा प्रेशर स्विच भी ऐसा अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम दिखाएगा ये। क्या फिर हमको परेशान होती है क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है बोल के। सिंपल तरीका है, ये स्प्रिंग सही तरीके से एकदम फिट होना चाहिए। देख सकते हो अभी बैलेंस आएगा इसमें।
देख सकते हो अभी इस तरह बैठना चाहिए दोस्तों ये। मैं फ्रेंड्स ये चेक नेट आके पहले हमें इस तरह से कस के देख लेना है, क्या ड्रम उतारने के बाद थोड़ा आसानी हो जाए, इसलिए पहले एक बार कस के देख लेना है, फ्री कर लेना चाहिए हमको। फ्रेंड्स देख सकते हो अभी सही तरीके से बैठ चुका है अभी।
सोचो ना बच्चे। माय फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन कंप्लीट तैयार हो चुकी है अभी। आइए माय फ्रेंड्स चालू करके देख लेंगे। फ्रेंड्स कहीं मिस्टेक हो गई रही तो कमेंट सेक्शन में बताएं माय फ्रेंड्स, क्योंकि आगे मैं भी सीख सकूं आपके ज़रिए से। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, सपोर्ट करिए माय फ्रेंड्स। ओके माय फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में।